Hey guys, this is Pallavi. Welcome to the channel and I hope you all are doing great. So as you can see, I'm in bridal avatar today. So this video is all about the bridal makeup tutorial, and this look I have created using the best products from Eva Cosmetics. And all those products are available in a complete makeup box, which is this one. This is the Eva must-have complete makeup box. Now in this makeup box, you'll get all the products that you'll need to create your own makeup. So इस मेकअप बॉक्स में दो कंपार्टमेंट्स है, एक जो ऊपर से खुलता है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, देन यहाँ पर एक ड्रॉअर सी है उसमें ये वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं. I'll tell you one by one what all these products are. तो सबसे पहले यहाँ पे है आई शैडो पैलेट, देन वी हैव फाउंडेशन एंड कंसीलर, वेरी गुड लिपस्टिक शेड. देन दूसरे वाले बॉक्स में है प्राइमर, देन वी हैव कॉम्पैक्ट, क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर, मस्कारा, काजल एंड आईलाइनर. So basically आपको कोई मेकअप किट बनाने की जरूरत नहीं है. This makeup box is well enough for you to create any look. Also इसमें कई सारे शेड्स आते हैं, जैसे कि आप फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो उसके लिए अलग किट है, और मीडियम कॉम्प्लेक्शन है तो उसके लिए अलग किट है, एंड डीप है तो उसके लिए अलग किट है. मेरा वाला जो है आई एम मीडियम कॉम्प्लेक्शन गर्ल, तो मेरा जो किट है वो मीडियम कॉम्प्लेक्शन पे बेस्ड है. So this was about the complete makeup box. Now let's start with the tutorial. I already have prepped up my skin with a lot of moisturizer, and now I'm gonna start with a primer. So the primer is Photo Perfect HD Face Primer, and ये silicone based primer है. ये pores को blur करता है अच्छे से, plus एक canvas बनाता है makeup के लिए, जिससे makeup long lasting और flawless लगता है. मैं इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड उसके बाद I'll wait for like 1 or 2 minutes, एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे. I don't know if you're able to see or not, but इससे क्या हुआ है, मेरी फेस पे जो भी थोड़ी बहुत शाइन थी ना, वो पूरी मैट हो गई है, एंड प्लस टच करने पे अलग ही पता लग रहा है कि फेस जो है मेरा बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है. For the next step, I'm using foundation, and this is the must-have waterproof liquid foundation. This one claims to give you full coverage, provide matte finish. It is sweat-proof and suitable for all skin type. So I'm just gonna take it on the back of my hand and dot it all over my face. This is my favorite technique to apply foundation. इससे क्या होता है ना कि foundation जो है equally distribute होता है. And when you're applying foundation, don't forget to apply it on your neck as well. Now you can use brush or sponge, you can use anything. I prefer to use blenders because इससे बहुत ज़्यादा natural finish आती है, plus makeup जो है वो cakey नहीं लगता है. So I'm gonna start blending it from the neck, and उसके बाद मैं face पर blend करूँगी. I really like the coverage of this foundation. Now as you can see, it is looking a bit pale, but let it set for 5 minutes or something. आपका foundation आपके tone पर आ जाएगा. Now मैंने थोड़ा सा foundation लिया है. If you want to build it up, you can take more, but मुझे थोड़ा सा natural finish चाहिए, इसलिए मैंने इतनी ही quantity ली है. Now usually after foundation we apply concealer, but then first I'll apply blush. Reason being क्योंकि ये liquid blush है, cream blush है, and इसका नाम है Must Have Everyday Lip and Cheek Tint, and this one is in the shade Timeless Mocha. So I'll be taking it directly into the brush and then apply. You can use blender to apply it as well. Pigment and shade of this blush is really good, and it is blending like butter. अब ब्लश के बाद जैसे कि मैंने बताया I'll be applying concealer. Reason being अब जब मैं concealer लगाऊंगी ना तो ब्लश के साथ अच्छे से blend हो जाएगा. Otherwise अगर हम concealer पहले लगाते हैं तो ब्लश यहाँ तक आ जाता, and it looks really weird. This concealer is also good. It is in warm tone, so इससे dark circle बहुत अच्छे से cancel होते हैं. Plus it is waterproof. So I won't cake it up. मैं थोड़ा सा eyes के नीचे apply करूँगी, and थोड़ा सा nose पर apply करूँगी, to give that illusion of a sharp nose. And you can also use it for highlighting, like you can apply here and here. But I like to keep it simple, so I'm just gonna apply it here only. And one tip I want to give you that whenever you're blending concealer, just look up and then blend.
how well this concealer have concealed the darkness. The next product after concealer which I'm going to use is the must-have Gets It Glow highlighter. It's a very beautiful cream highlighter that blends like anything. So just take it a little bit on your finger and then apply on the high points of your face. थोड़ा सा cheek bones पर मैं add कर रही हूँ because I really like to glow. Can you see the glow? I'm loving it. Now it's time to use a compact, and this is the must-have compact. And इसके क्या features हैं मैं आपको बता देती हूँ. It will give you a long-lasting, oil-free matte look, and it spreads easily to give buildable coverage plus fine lines, spots, and imperfections. This is a really good compact, and because we are doing like dewy makeup, we are putting all of the cream products. I'm not going to ruin it with applying compact all over my face, but मैं बहुत थोड़ा सा अप्लाई करूंगी और कुछ ही जगहों पर अप्लाई करूंगी. So I'll just be applying this compact, a little bit of compact on the areas where we tend to crease, जैसे कि under the eyes and area around the mouth. Because अगर मैं full face पे अप्लाई कर लूंगी तो पूरा face हमारा मैट हो जाएगा और cream products लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा. So I like to keep it dewy, that's why. Make sure you're not applying too much of compact, otherwise creases वैसे भी आ जाएंगे अगर ज़्यादा product हमने अप्लाई किया. If you like matte finish of makeup, or if you're applying it in summers जहाँ पे आपको dewy makeup नहीं चाहिए, then you can apply this compact all over face. Now we have completed the base makeup, and next I'll move on to the lipstick. And for lipstick, I'm applying the long-lasting matte lipstick, and this one is in the shade Cinnamon Chai. It is a very beautiful nude and subtle shade. जैसे कि अभी ट्रेंड कर रहे हैं मेकअप, उसके लिए बहुत ही अच्छा शेड है. And if you're a medium complexion girl and looking for a nude shade, this one is the perfect shade for you. I really like the texture of this lipstick. एक swipe में apply होती है and it is really pigmented. Now moving on to the last step, which is eye makeup, and for that I'm using the HD eyeshadow, which is known as the Eye Talk Glam Life. ये इसका नाम है palette का, and it has some beautiful shades in it. See. So I'm gonna be doing a really simple eye makeup. जैसे कि अभी ट्रेंड कर रहे हैं लोग subtle सा makeup, subtle bridal makeup वाला, तो वही वाला मैं करूँगी, and it is really easy to create. So let's begin. So first of all, I'm taking this shade and fingers से apply करूँगी, क्योंकि fingers से shimmer shadows बहुत अच्छे से apply होते हैं. Really pigmented, so beautiful. So पहले मैंने पूरी lid पर same shadow apply किया है, and उसके बाद मैं fluffy brush use करूँगी to blend the edges out. So eyelid पर हमने single shadow apply किया है and उसको blend किया है fluffy brush से, and then lower lash line के लिए मैं use करूँगी थोड़ा सा darker shade, which is this one, उसी के पास वाला shade that I'm gonna apply. Then teardrop corner को highlight करने के लिए I'm gonna be using a light shimmer shade, which is this one, last one, बहुत ही beautiful सा shade है, light golden sort of shade है. So उसको मैं apply कर रही हूँ teardrop corner में और थोड़ा सा brow bone पर. So next I'm going to use the Eva Long Stay Liquid Eyeliner. This eyeliner is my most favorite. First of all, it is jet black and it gives you a really beautiful glossy finish. And सबसे अच्छी चीज जो मुझे इसके बारे में लगती है वो है इसका wand. बहुत ही पतला सा है. I don't know क्या स्पेशल है इसमें, but ये हमेशा मेरा लाइनर ना एकदम परफेक्ट लगता है इससे. बहुत ही sleek सा इसका wand है and it gives me that precise application look. And I use this only for all my brides. So let's create a wing liner out of it.
I'm going to use this all day kohl kajal and this one is in the shade black and मैं बहुत थोड़ा सा waterline में apply कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा smudge look नहीं दे रही। Then last product जो मैं use कर रही हूँ वो है mascara, which is named as Black and Gold 24-hour HD mascara, and this mascara is also waterproof. So here we have completed the makeup look. Just give me 2 minutes ताकि मैं बिंदी और ज्वेलरी दुपट्टा वगैरह से अपना look complete कर लूँ. So I'll be back. This is the whole makeup look which I've created using the IBA must-have complete makeup box. I am sure you love it and it is really simple to create. Plus the products are really good. बहुत अच्छी finish देता है. As you can see how good my makeup turned out. So if you're someone who's planning to create their own makeup kit, आपको plan करने की जरूरत नहीं है. IBA has already created for you. You just need to buy it. मेरा जो शेड है जो मेकअप बॉक्स है वो मीडियम है और अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन है या डीप है तो उसके लिए भी अलग से मेकअप किट अवेलेबल है. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड देन बाय. Also, the direct shopping link is mentioned in the description box. अगर आपको इसके बारे में कोई भी information चाहिए या आप खरीदना चाहते हैं तो you can go directly from there. So this was it for today and until next time, see ya.